गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर कनेक्टिंग हियर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू यू अंशु, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। We are just waiting for a few minutes. Once all the persons, those who used to connect with us, once they are going to be here, we would be starting the session. Ansuji, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are here. Manish Kumarji, a very good evening to you. Very good evening to every single student. Let's just wait for a few more people. So once they are going to be here, I would be starting the session. जैसे ही हमारे सभी छात्र छात्राएं जो रेगुलरली हमारे साथ सेशंस का हिस्सा होते हैं, जैसे ही वो कनेक्ट करने से आ रहे हैं, हम हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे। Kajal, very good evening to you. Very good evening to everyone. Sabhi ko namaskar. Sabhi ko good evening. By the day, we will be having discussion over this. That is part number 14, article number 308 to the 323. You should be thoroughly clear in context of this that this part we had started in the previous session. In the previous session only we had started this particular part. And I'm constantly asking to you guys that this part is classified or can be classified into the two sections. The very first from 308 to the 315, and at the same time from 315 to the 323, 340. In the previous session, we are done with the very first section of this, that is services under the union and the state. When it comes to the this, that is, just give me a single minute. When it comes to part number 14, the constitutional provisions are enshrined under Article 308 to the 323. And the framers of Indian Constitution had classified this particular part into two segments. The very first segment from 308 to 314, where we do discuss about the provisions of services under the union and the state. Services under union and state, which we had discussed in the previous session, which we had covered in the previous session. So those peoples who were not there with us in the previous session, please be very clear that you can connect to this particular session. You can look after the last or the previous YT session of mine. तो आप make sure करिए कि आप previous session को जाकर visit कर सकें. By the day, we will be starting. Junaid, very good evening to you. Very good evening to every single student. By the day, we will be looking after the provisions from 315 to the 323. And when it comes to the 315 to the 323, Mobina, very good evening to you. Very good evening to everyone. The provisions for the Public Service Commission are started. Provisions for Public Service Commissions are started. And when it comes to the Public Service Commission, what we need to understand, there are three Public Service Commission which are having existence according to the provision of the Indian Constitution. The very first is the Union Public Service Commission, Union Public Service Commission, and the second is a State Public Service Commission. Second is a State Public Service Commission. Neha, Abhishek, very good evening to you guys. Very good evening to everyone. State Public Service Commission. And the next and the last, this is a Joint State Public Service Commission. This is Joint State Public Service Commission. So the provisions in context of all these three commissions are started under these articles, that is 315 to the 323. तो इनके संबंध में जो प्रावधान है, इनके संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें नजर आते हैं, वह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ नजर आते हैं? तो इनके संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 315 से 323 में नजर आते हैं. By the day, we will be having discussion over Union Public Service Commission of India. Union Public Service Commission of India. Union Public Service Commission of India. But before heading to the Union Public Service Commission of India, we will definitely be looking into the provisions of 315 to the 323. लेकिन हम यूपीएससी की ओर बढ़ सकें, आज वर्तमान में यूपीएससी का जो स्टेटस है उसे समझें, उसके पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं. अंजलि, वेरी गुड इवनिंग टू यू. गौरव, वेरी गुड इवनिंग टू यू. वेरी गुड इवनिंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोस्त हुआ करते हैं. उसके पहले हम 315 से 323 तक के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझने का प्रयास करेंगे. सो प्लीज बी वेरी क्लियर दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड इफ यू आर कनेक्टिंग हियर, because the topics, these topics which I will be covering in the month of the July, as well as in the month of the August, as well as in the month of the September on the BIT, these sessions will not be there on the plus. These sessions will not be conducted on the plus.
They will not be telecasted on the plus. They will not be live on the plus. So please be very clear. If you are connecting here, stay connected and you can learn from here on a very good note. You can hear me out on a max to max note. जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुन सकें, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुनने का प्रयास करिएगा। ये सेशंस आपके इंटरेस्ट में बेहद इंपॉर्टेंट होने सारे। तो हम इन पर चर्चा करने वाले। But before heading to all such discussions, I would like to let you know about India's largest learning platform. When we talk about the India's largest learning platform, what we need to understand. India's largest education platform. India's largest education platform. That means I'm talking about an academy. Hello, Anjali ji. That means I'm talking about an academy. तो हम भारत के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्लेटफॉर्म सिर्फ होने का दावा नहीं करते भाई, हम हैं, आपको ये समझना होगा। निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे when it comes to the English medium content, when it comes to the English medium deliverance, when it comes to the English medium batches, most of the platform which are committing you guys, most of the platform which are asking you that we will be providing the platform, we will be delivering the batches in the English language, they are not delivering the sessions in the English language. They are just making the false promises up. So if you want to overcome the false promises up, start connecting with us on the Unacademy. We are having two kinds of classes with us, the plus classes as well as the special classes, and definitely I will be letting you know the characteristics of the special classes. At the same time, I will be letting you know the characteristics or the advantage of the plus classes as well. When it comes to the special classes, what you can cover from these special classes are the most good thing into the nature. They are most good thing into the nature which they exist, because we can learn something very good from here. We can learn how to evaluate the content. We can learn how to evaluate ourselves. Most of the educators are conducting the MCQ sessions here. अधिकांशतः जो टीचर्स हैं वो यहाँ MCQ sessions जो हैं MCQ sessions को कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप MCQs को लुक आफ्टर करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ एवेल्युएशन चाहते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है उसको लेकर, तो मेक श्योर करिए कि आप यहाँ कनेक्ट कर सकें। विशाल पाठक जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। एट द सेम टाइम अगर आप टीचर के कंटेंट को एवेल्युएट करना चाहते हैं तो टीचर के कंटेंट को एवेल्युएट किया जा सकता है स्पेशल सेशंस के माध्यम से। लेकिन स्पेशल सेशंस के बारे में अगर कुछ है जो मुझे शायद पसंद नहीं आता है और जो मैं चाहता हूं कि नहीं होना चाहिए, वह है इनकी लिमिटेड संख्या। यह बेहद लिमिटेड है नेचर में, यह बेहद ओकेजनल है नेचर में, यह जब कभी डिलीवर करे जाते हैं। And I hope you guys are having very clear cut idea when it comes to the civil services. The civil services are in needs of the consistency. They need, they ask for the consistency by their own. ये आपसे कहते हैं कि आपको कंसिस्टेंट होना होगा, ये आपसे कहते हैं कि आपको हार्ड वर्क को परफॉर्म करना होगा, ये आपसे कहते हैं कि आपको ऑनेस्टली हार्ड वर्क को परफॉर्म करना होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे, अगर आप लिमिटेड मैनर में सेशंस को अटेंड करेंगे, अगर आप ओकेजनल मैनर में सेशंस को अटेंड करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास उस लेवल की नॉलेज जो है, जो होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड है सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में, आप उसे गैदर कर सकते हैं। और अगर रिक्वायर्ड नॉलेज आपके पास नहीं होगी, रिक्वायर्ड प्लानिंग आपके पास नहीं होगी, रिक्वायर्ड कंटेंट आपके पास नहीं होगा, तो सिविल सर्विसेज की जर्नी जो है वो इतनी आसान नहीं होगी भाई, ये समझना होगा। तो इसके कंटेक्स्ट में इसका क्या विकल्प है? तो इसका विकल्प हमारे पास अवेलेबल है। We are having the alternative. We are having exactly the alternative of this as well. We are delivering the plus sessions. We are conducting the plus sessions. There are lots of features of the plus sessions, such as you can learn live from the comfort of your home. Unlimited access to all the courses. That means one subscription. One subscription, you just need to subscribe once. And you will be having access to all the courses which are available at the platform. Top educators of India on the one platform. Exhaustive coverage of the syllabus, complete exam preparation, regular doubt clearing sessions. अभिषेक जी अब नहीं होंगे बाहर, वो 1 से 2 बार समस्या होती है, आप उसको जाकर दोबारा लिंक से ओपन कर लीजिए भाई। प्लीज रीओपन इट फ्रॉम द लिंक, रीओपन इट फ्रॉम लिंक, रीओपन इट फ्रॉम लिंक। उसमें एक दिक्कत ये होती है कि जब आप सेशन में कनेक्ट करते हैं तो सेशन में 5 से 6 मिनट के बाद जाकर एक आपको कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं, तो आप रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं करना होता है, आपको दोबारा जाकर लिंक के माध्यम से सेशन को कनेक्ट करना होता है। आप दोबारा लिंक से एक सेशन कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इस प्रकार की समस्या जो है वह आपके साथ नहीं आएगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वह आप फेस नहीं करेंगे। तो एक सब्सक्रिप्शन और कई सारे एडवांटेजेस आपके पास हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टीचर का जो करिकुलम है, यहाँ पर टीचर के जो शेड्यूल है वह आपके पास होता है।
प्रायर शेड्यूल आपके पास होता है, आपको प्रायर आइडियाज़ होते हैं, किसके बारे में आपके पास प्रायर पर्सपेक्टिव है कि सर ये टीचर जो है इस पर्टिकुलर दिन पर ये टॉपिक कवर करने वाला है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट, you are having the idea at the prior note that by this particular day we will be covering up this topic. And the sessions are conducted on the very regular note. The top educators of India, they are available on the single platform. तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, तो यकीन मानिए आपके पास 2 घंटे बचे हुए हैं, सवा घंटा बचा हुआ है क्योंकि हम एक ऑफर लेकर आए हैं। ऑफर है आपके लिए 20% ऑफ। आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करिएगा KD496 का। अनअकैडमी की ओर से आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आज ही इसको ग्रैब कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी बेहद शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है। यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी फॉर within the next remaining period of this particular day only. Because from tomorrow, when you will be using the raffle code KD496, you will be allotted only 5% discount. तो आपको सिर्फ 5% डिस्काउंट कल से अवेलेबल होगा। आज 20%, कल 5%, कितना डिफरेंस है, तो आज ही ले लेना चाहिए। I hope you guys are having very clear-cut idea that in the that previously that from 29th of March, that exactly from 29th of March we had launched the batch for the English medium students, which is completely devoted to the English medium students only. In this particular batch, Prerna Singh ma'am, she is looking after the Bihar specific GK. I Kuldeep Dubey covering the Indian polity as well as the Indian history. Dr. Akriti Ras, he is covering the general science. Rahul Singh, sir, he is covering the economic portion as well as the current affair portion. At the same, Sir Sarans Gupta, sir, will be looking after the mental ability or the general ability. And if you have not enrolled this batch yet, please do enroll it. This will definitely help you out in the upcoming batch, in the upcoming prelims. Believe me, this will definitely help you out into the upcoming prelims. When you will be connecting on a consistent note to the sessions, when you are going to be very consistent in context of the sessions, definitely you can enhance your understanding of the of any subject which we will be delivering here, because this particular batch is comprising almost 600 plus live sessions, and the language of the content as well as the language of the deliverance will be English, and looking after the response, looking after exactly the response of this particular batch which we had launched from 29th of March. We are coming up with this particular batch. This is going to be the most good thing. This is going to be the most exciting thing that we are going to launch the 70th BPSC for the 70th BPSC foundation batch for the English medium students only. Already started from 6th of July. That means by yesterday we had launched this particular batch. Dr. Akriti Raz ma'am, she is conducting the sessions. She is going to lead this particular batch. She had started the sessions of general science. At the same time, Rahul sir had started conducting the sessions of the current affair. I will be delivering the sessions of Indian history from 22nd of July. Please make sure कि अगर आप 70वें BPSC की तैयारी कर रहे हो तो मेरा रेफरल कोड KD496 को नहीं भूलना है। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करिए। अनअकैडमी की ओर से आज 20% प्लस 3 महीने का 12 महीने पर और 6 महीने का 24 महीने पर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। इसी प्रकार से हिंदी मीडियम का भी बैच हमारे पास अवेलेबल है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित तौर पर हिंदी मीडियम के बैच को एनरोल कर सकते हैं। यह मेरे बारे में है। ऐसे छात्र छात्राएं जो मुझसे चिरपरिचित नहीं है, नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट माई सेल्फ, you can visit out the profile of mine over an academy. It's Kuldeep Dubey. Do visit the profile. Look after the special sessions. Start connecting with me on the plus classes. You will definitely be that much capable enough that you will be having a very good understanding of the subject. So let's begin right now. As I had asked you that in the previous session only, in the previous session only, we are done with this provisions. We are done with the provision from 308 to the 314. Let's have a look over these articles. Under Article 308, we had discussed about the interpretation, but in the previous session only, I had asked you that this article is repealed or there is no more existence of this particular article since 31st of October 2019. 31 अक्टूबर 2019 से हमें इसका एग्जिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। And when it comes to the article number 309, recruitment and the condition of the service of the person serving under the union as well as the state had been started. कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बोले सर यूनियन पब्लिक सर्विसेज का हिस्सा है
या स्टेट पब्लिक सर्विसेज का हिस्सा है, तो उसके कंटेक्स्ट में रूल्स रेगुलेशंस किसके माध्यम से बनाए जाएंगे? तो सर एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के माध्यम से बनाए जाएंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल. And when it comes to the tenure of the office of the person serving under the union or the state, sir, for union services, the tenure is determined by president, and for the state services, sir, tenure is determined by governor. That's what we had discussed into the previous session only. No person, those who are serving under the union services or the state services, can be dismissed or can be removed, or their rank can be reduced by the person who is subordinate to the appointing authority. This is the point which we need to understand. आपका अपॉइंटमेंट जिसके माध्यम से हुआ था, वही व्यक्ति आपको क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। सर, उसका सबऑर्डिनेट व्यक्ति आपको रिमूव नहीं कर सकता, उसका सबऑर्डिनेट व्यक्ति आपको डिसमिस नहीं कर सकता, उसका सबऑर्डिनेट पर्सन जो है वह आपको आपकी रैंक को रिड्यूस नहीं कर सकता. And when it comes to the removal, or when it comes to the dismissal, or when it comes to the reduction into the rank, what we need to understand, you will be given the ample time, you will be given the ample time to put forward your side as well, until unless and committee is going to inquire into such allegations which are imposed on you. Those allegations will be inquired by a committee, and the committee will be providing the ample time so that it can hear you out. And if the allegations are going to be proved, then you will be considered as the dismissed, then only you can be removed, then only you can be dismissed. And under article number 312, we had discussed that the council of state, council of state is having the sole authority. Council of state is having the special power in context of creation of the all India services. When it comes to the proposal for the all India services, proposal for a new all India services, such proposal will only be introduced into the council of state. That's what we had discussed into the previous session. Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? Please do let me know. जब हम प्रीवियस सेशन में थे, तो मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे कहा था कि भाई, आपका जो एक ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अगर एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन किया जाना है, तो इसका जो प्रपोजल है वो कहाँ पास होगा? तो इसका प्रपोजल सर सिर्फ और सिर्फ आपके काउंसिल ऑफ स्टेट में पास होगा. एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट? प्लीज टू लेट मी नो. एग्जैक्टली. सबऑर्डिनेट मीन्स समवन एट द लोअर और अनदर पोस्ट. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट अंजलि जी, कि जो उस पोस्ट से नीचे है, उस ऑफिस से नीचे है, उस व्यक्ति के माध्यम से उसका डिसमिसल नहीं हो सकता. ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था. ट्रांजिशनल प्रोविजंस को हमने डिस्कस किया था. कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, बट राइट नाउ अभी ट्रांजिशन का ऑलमोस्ट आप देखेंगे 72-73 ईयर्स हो गए, तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. आर्टिकल 314 की जब आप बात करते हैं, सर आर्टिकल 314 इज कंसिडर्ड एज द रिपील्ड, ये तो खत्म हो गया है. लेट्स बिगिन विद दिस. आर्टिकल नंबर 315 द सेकेंड पार्ट. मैंने आपसे अभी कहा था कि जब आप 308 से लेकर 323 की बात करते हैं, तो 308 से 323 को दो हिस्सों में पढ़ा जा सकता है. द वेरी फर्स्ट फ्रॉम 308 टू द 314, सर, about the services under the union and the state. And when it comes from the 315 to the 323, what we need to understand, the provision for the public service commission are started. That means the existence of the public service commission, the constitution of the public service commission, the functions of the public service commission, the duties of the public service commission, their appointment, their service conditions can be looked after, can be traced back from article number 315 to the 323. So right now I'm going to start the article number 315. Please try to hear me out as much as you can, so that एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को आप जनरेट कर सकें. किसके कंटेक्स्ट में? बोले सर, ये आर्टिकल नंबर 315 के कंटेक्स्ट में. और मैंने आपसे अभी कहा कि जब आप सर्विसेज की बात करते हैं, जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करने जा रहे हैं, तो आपको एक पॉइंट समझना होगा. क्या पॉइंट आपको समझना होगा? कि भारत में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वह पब्लिक सर्विस कमीशन हमें कितने लेवल पर नजर आता है या कितने प्रकार से नजर आता है, तो यह हमें समझना होगा कि सर, पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. एट द सेम टाइम, सर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, state public service commission. At the same, sir, there are some provision in the Indian constitution for the existence of joint state public service commission as well.
joint state public service commission as well. And as I had asked you that by the day we will be having discussion over the UPSC, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह हमारा चर्चा का विषय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर ही चर्चा करेंगे। सर स्क्रीन जो है वह ब्लर दिख रही है, क्या किसी और दूसरे छात्र छात्रा के साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है? प्लीज टू लेट मी नो। इज देयर एनी अदर स्टूडेंट हु इज फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज? प्लीज टू लेट मी नो। और अंजलि जी इज द ओनली वन। तो जब हम यू नाउ ओके दैट्स व्हाई गेट ओके ओके दैट्स व्हाई गेट। तो अगर आप चाहे यूपीएससी के एग्जिस्टेंस की बात करें, यूपीएससी का एग्जिस्टेंस 315 से है। एट द सेम टाइम अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, सर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जिस्टेंस जो है वो 315 से है। एट द सेम टाइम सर ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एट द सेम टाइम ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जिस्टेंस के प्रोविजन भी जो है वो आर्टिकल नंबर 315 में ही दिए गए हैं। लेकिन हमें कुछ समझना होगा, बहुत स्पष्ट तौर पर समझना होगा। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि आर्टिकल 315 के माध्यम से एग्जिस्टेंस है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, आर्टिकल 315 के माध्यम से एग्जिस्टेंस है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। बट एट द सेम टाइम ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात जो करी गई है वह 315 में ही करी गई है। तो जब तीनों का ही एग्जिस्टेंस 315 से है, तो फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये समझ आता है हमें, ये हमें समझ आता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेटस जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल है, यह भी हमें समझ आता है। लेकिन सर यह समझ नहीं आता कि सर जब 315 के माध्यम से ही ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जिस्टेंस है, तो फिर क्यों इस बॉडी के पास स्टैट्यूटरी स्टेटस है, ये आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं। सो प्लीज बी वेरी क्लियर दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड। क्यों इस बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं? व्हेन आई एम कॉन्स्टेंटली आस्किंग यू गाइज, when I'm constantly asking you guys that the existence of the UPSC, State Public Service Commission, as well as the Joint State Public Service Commission, so existence can be traced back from article number 315. But when we do look after the status of the UPSC as well as the State Public Service Commission, they are constitutional into the nature. And when it comes to the so-called this, that is a Joint State Public Service Commission, this particular institution is a statutory into the nature. इसका जो status है वो statutory है। तो ऐसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है? Let's have a look over the constitutional provision of Article 315. तो 315 ही देख लेते हैं। Subject to the provision of this article, there shall be public service commission for the union and for the public service commission and for each state. आप जानते हैं भाई, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है। मैंने आपसे यह कहा था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखने जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कंटेक्स्ट में क्या लिखा होता है किसी आर्टिकल में? सर देयर शैल बी, क्या लिखा होता है? देयर शैल बी। देखो लिखा हुआ है देयर शैल बी, लेकिन देयर शैल बी किसके कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है? बोले सर देयर शैल बी लिखा हुआ है कि आपके यूनियन लेवल पर क्या होगा? बोले सर पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। आपकी स्टेट लेवल पर क्या होगा? बोले सर पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ कहीं से कहीं तक आपको क्लॉज नंबर 1 में है नजर आ रहा है कि भाई नहीं देयर शैल बी अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और जब नजर नहीं आ रहा है तो फिर हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि हाँ सर यह जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। एम आई अंडरस्टूड टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? प्लीज टू लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब यहाँ आपको दूसरा क्लॉज समझना है, और क्या समझना है कि सर देयर शैल बी वन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दैट ग्रुप ऑफ स्टेट, and if a resolution to that or more states may agree that their effect is passed by house, where there are two houses, by each house of the legislature of each of those state, बोले क्या? बोले parliament may by law provide for appointment of a joint state public service commission referred in this chapter as a joint public service commission to serve as the need of those state. तो बोले क्या कहा गया? बोले सर अगर दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट जो हैं वह क्या करते हैं? बोले सर दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट अपने लेजिस्लेचर में, अब लेजिस्लेचर का मतलब है सर वहां पर एक हाउस का एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, दो हाउस का एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है। तो अगर
इस राज्य में हम चूंकि बिहार की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि बिहार में सर विधानसभा का एग्जिस्टेंस भी है और बिहार में सर आपके विधान परिषद का एग्जिस्टेंस भी है। तो निश्चित तौर पर सर अगर यहाँ ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी जाए बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, तो सर बिहार के लेजिस्लेचर को और आपकी उड़ीसा के लेजिस्लेचर को एक रिजोल्यूशन पास करना होगा। क्या रिजोल्यूशन पास करना होगा कि हम चाहते हैं पार्लियामेंट जो है वह एक एक्ट पास करे। मतलब सर स्टेट लेजिस्लेचर चाहता है कि पार्लियामेंट एक्ट पास करे और निश्चित तौर पर आपको लगातार पढ़ाया जा रहा है कि सर एक ऐसी बॉडी जिस बॉडी का एग्जिस्टेंस जो है, जिस बॉडी का एग्जिस्टेंस जो है वह कहां से है, बोले पार्लियामेंट्री एक्ट से है। तो वह बॉडी कैसी है, बोले सर वह बॉडी स्टैट्यूटरी है। एम आई अंडरस्टूड टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर कनेक्टिंग हियर, प्लीज टू लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको बेहद स्पष्ट हूँ। Why UPSC as well as the state PCS are having a status of being constitutional body in the nature, and at the same time when it comes to the Joint State Public Service Commission, from Article 315 only, from clause number 2 only, very clearly stated the Joint State Public Service Commission is going to be a statutory body because a resolution will be passed and because an act will be passed from the parliament. Understood to every single student, those who are connecting here, please do let me know. ये समझना बेहद जरूरी था। Right now, heading forward to the next one, let's have discussion over article number 316. तो जब हम 316 की बात करने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट इन द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी के मेंबर हैं इनके मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं हम इनके मेंबर्स के टर्म टेन्योर की बात कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। Chairman and other member of the Union Public Service Commission shall be appointed by the president। तो बोले किसके द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे, बोले सर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे। मतलब यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं और यूपीएससी के जो मेंबर हैं सर उनका अपॉइंटमेंट किसके माध्यम से होगा, तो उनका अपॉइंटमेंट सर प्रेसिडेंट के माध्यम से होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू दी State Public Service Commission chairman and member, they will be appointed by the governor of the concerned state। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? Please to let me know। क्या मैं आपको बेहद स्पष्ट हूँ? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। जब हम यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर्स की बात करते हैं तो इनका अपॉइंटमेंट हमें आपके प्रेसिडेंट के माध्यम से नजर आता है, और जब हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की बात करते हैं तो इनका अपॉइंटमेंट जो है वह हमें गवर्नर के माध्यम से नजर आता है। अब बोले सर सर्विस कंडीशंस कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई हैं क्या कि मेंबर्स का कैसे अपॉइंटमेंट होगा, किस मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। Provided as nearly as maybe one half of the members of every public service commission shall be persons who at the date of their respective appointment have held office for at least 10 years in either under the government of India or under the government of a state। तो बोले सर यहाँ से स्ट्रेंथ के बारे में क्या है, बोले सर यहाँ अभी तक तो कुछ स्ट्रेंथ के बारे में कहा नहीं गया, कंपोजिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन हमसे सिर्फ इतना कहा गया वॉट एवर इज गोइंग टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द यूपीएससी। वॉट एवर इज गोइंग टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ द यूपीएससी, at least half of the member, at least half of member should have experience of the 10-year experience in state services, in either state services or in the government services। Am I very clear to every single student? These are the only qualifications which are stated। सिर्फ यही qualifications हैं जो बताई गई हैं। उम्मीद है आपको बेहद स्पष्ट होगा। Heading forward to the next one, let's have a look over the tenure। अब हम टेन्योर की बात करने जा रहे हैं, टर्म की बात करने जा रहे हैं। तो हमसे क्या कहा गया, इफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन becomes vacant or if any such chairman is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office, those duties are until some person appointed under clause 1 or to the vacant office has entered duties thereof, as the case may be, until the chairman has resumed his office, performed by such other member of commission as the president may appoint। बोलिए सर क्या कहा गया, यूपीएससी के चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट है। सर देयर इज अ वैकेंसी इनटू द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज।
Then in such condition, sir, acting chairman will be appointed by the president. Am I quite clear to all the persons those who are connecting here? Please to let me know. तो acting chairman किसके माध्यम से अपॉइंट किया जाएगा? बोले acting chairman जो है वो यूपीएससी आपके प्रेसिडेंट के माध्यम से अपॉइंट किया जाएगा। और जब आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अगर अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसके फंक्शंस उसकी ड्यूटीज को किसके सॉरी एक्टिंग जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट किया जाएगा और किसके माध्यम से अपॉइंट किया जाएगा? गवर्नर के माध्यम से अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, if the office of the joint state public service commission is going to be vacated, then in such a case, sir, the president will be appointing the acting chairperson. Am I very clear to all the persons those who are connecting here? Please to let me know. Sir, जब joint state public service commission के chairman का office खाली होने जा रहा है तो इस केस में कौन अपॉइंट करेगा? तो बोले president अपॉइंट करेगा। So am I very clear with the appointment conditions? Please do let me know. क्या मैं appointment conditions के साथ आपको बेहद स्पष्ट हूँ? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। आप अगर इसे ऐसे देखना चाहें तो हम और आसान तरीके से देख सकते हैं। बोले सर, मेंबर्स of UPSC at the same time JSPSC appointed by president, appointed by president. Coming to the next one, members of State Public Service Commission, chairman of State Public Service Commission, sir, appointed by governor, appointed by governor. Whenever there is going to be a vacancy into the office of the chairman, vacancy in office of chairman, in case of UPSC, in case of JSPSC, appointing authority will be president, appointing authority will be president, and in case of a state public service commission, the appointing authority will be governor. Am I very clear to all the persons with the article number 60 316 clause number 1 as well as clause numbers 1A? Please do let me know. क्या मैं आपको बेहद स्पष्ट हूँ? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ये आपको समझना है। Right now, let's talk about the tenure. Let's talk about the duration of these members. तो अब इनके टाइम टेन्योर पर चर्चा कर लेते हैं। For what period of time they will be holding the office? कितने समय के लिए? For what period of time? For what period of time they will be holding the office? So let's talk about this. A member of the Public Service Commission, member of Public Service Commission, shall hold office for a term of 6 years from the date on which he enters upon his office. बोले सर, चाहे यूपीएससी का मेंबर हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर हो, वह कितने समय का ऑफिस को होल्ड करेगा? बोले सर, इसमें तो कहा जा रहा है कि वह 6 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा, 6 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा। बट एट द सेम टाइम सर कुछ और भी कहा गया था। Sir, the age of 65 years in the case of the Union Commission and the age of sir so-called 62 years in the case of State Commission and the Joint Commission. Am I very clear to all the persons those who are connecting here? तो बोले सर यूपीएससी के केस में है 6:65 है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में है 6:62 है और जेएसपीएससी के केस में है 6:62 है। अंडरस्टूड टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? प्लीज टू लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको बेहद स्पष्ट हूं, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब बोले सर ये तो ठीक है, इनके टेन्योर की हमने बात कर ली, क्या ये रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं। क्या इनका रिमूवल हो सकता है? बिल्कुल सर, इनका रिमूवल हो सकता है। A member of Public Service Commission by writing under his hand address to the so-called president in case of the Union Public Service Commission और Joint State Public Service Commission. बोले सर यूपीएससी का जो मेंबर है या यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा? बोले सर प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है और जो मेंबर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेंगे? बोले सर वह अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे।
बट एट द सेम टाइम सर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर हैं वह अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेंगे, तो वह अपना रेजिग्नेशन जो है वह गवर्नर को सबमिट करेगा। अंडरस्टूड टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर, प्लीज टू लेट मी नो इन केस ऑफ द रेजिग्नेशन, यू गाइस कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, ताकि हम आगे बढ़ सकें और हम अगली चर्चा कर सकें। ये तो हमने इनका रेजिग्नेशन देख लिया। लेट्स टॉक अबाउट द सो कॉल्ड रिमूवल। क्या सर इनका रिमूवल भी हो सकता है? बिल्कुल इनका रिमूवल हो सकता है। किस आर्टिकल के माध्यम से? बोले सर 317 के माध्यम से इनका रिमूवल हो सकता है। तो आपको यह समझना है कि सर अंडर आर्टिकल नंबर 316 द अपॉइंटमेंट कंडीशन एट द सेम टाइम सर सो कॉल्ड द टेन्योर और द ड्यूरेशन हैड बीन स्टार्टेड, एंड व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 317 द रिमूवल कंडीशंस आर स्टार्टेड अंडरस्टूड टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर, प्लीज टू लेट मी नो। Heading forward to the next one, there is one more question which do exist here. A person who holds office as a member of Public Service Commission shall on the expiration of his term be ineligible for reappointment to that particular office. बोलिए सर ये क्या कहा गया है? Let's try to understand this. What the framers want to say in context of this particular clause. If someone, a member from, अब हम क्या कहना चाहते हैं? बोले सर हम कहना चाहते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली बोले सर हम कहना चाहते हैं यहाँ पर कि कोई व्यक्ति अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी के ऑफ मेंबर था यहाँ पर, तो सर वह फिर दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा टू दिस पर्टिकुलर ऑफिस। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर, प्लीज टू लेट मी नो दिस वी वांट से सो। हम ये कहना चाहते थे। अगर कोई यूपीएससी का चेयरमैन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, तो सर वही किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये आपको समझना होगा। Right now, heading forward to the next one, let's have discussion over article number 317. That is the removal as well as the suspension of the member of the public service commission. तो हमने 315 में कंपोजिशन देखा, 316 में जाकर हमने क्या देखा? बोले सर 316 में जाकर हमने 315 में जाकर हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जिस्टेंस देखा। 316 में जाकर हमने अपॉइंटमेंट देखा। 317 में वी विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर द रिमूवल एज वेल एज द सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। लेट्स फॉरगेट दिस, this is not our concern, so let's forget this right now. The chairman or any other member of the public service commission shall only be removed from his office by order of the president. Am I very clear to all the persons? चाहे सर यूपीएससी का चेयरमैन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो, चाहे जेएसपीएससी का चेयरमैन हो, आपका चाहे चेयरमैन हो, चाहे मेंबर हो, चाहे चेयरमैन हो सर मेंबर हो, चाहे यहाँ चेयरमैन या मेंबर हो, इनका रिमूवल सिर्फ एक ऑर्डर से होगा। और ऑर्डर कौन सा है? बोले सर रिमूवल विल ओनली बी देयर फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर कनेक्टिंग हियर, प्लीज टू लेट मी नो कि सर बिना राष्ट्रपति के ऑर्डर के नहीं हो सकता। अब चूंकि सर राष्ट्रपति के ऑर्डर से हो रहा है, और अभी हमने आर्टिकल नंबर 316 में डिस्कस किया था कि सर एक इंक्वायरी को सेटअप किया जाएगा, तो सर ऑब्वियस है कि कौन सी कमेटी को सेटअप किया जाएगा? बोले सर अंडर आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का एक गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का गठन किया जाएगा। वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर हियर, प्लीज टू लेट मी नो। 145 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का गठन किया जाएगा। Very recently, we had discussed about the Article 145 as well. Please do let me know the provision of 145. I am expecting you guys will be letting me know the provision of 145. मैं उम्मीद लगा रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कि आप मुझे 145 का जो प्रोविजन है वो कमेंट करके बताएंगे। दैट्स रियली वेरी गुड। 145 में हमें क्या नजर आता है? बोले सर प्रोसीजर नजर आता है, एक बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। हमने डिस्कस किया हुआ था कि सर राष्ट्रपति का जब रेफरेंस होता है 143 के माध्यम से, राष्ट्रपति ने जब एडवाइस ली है तो कम से कम 5 जजेस की बेंच जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ 5 जजेस की बेंच के माध्यम से क्या किया जा रहा है? बोले सर आपके जो चेयरमैन है, आपके जो मेंबर है, इनके रिमूवल कंडीशंस को डिस्कस किया जा रहा है। वहां पर वह व्यक्ति प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होने के साथ ही साथ सर उसे एम्पल चांसेस दिए जा रहे हैं, उसे भी सुना जाएगा। वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट, यू गाइस कैन लेट मी नो। अब दूसरा पॉइंट ये आपको समझना है कि सर जब तक क्या चल रहा है? बोले सर इंक्वायरी चल रही है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या वो है व्यक्ति काम कर सकता है? वेदर ही कैन रिमेन इनटू हिज ऑफिस? सर नो, ही कैन नॉट रिमेन इन द ऑफिस।
बिकॉज द इंक्वायरी इज अंडर प्रोसीडिंग। तो जब इंक्वायरी अंडर प्रोसीडिंग में है तो फिर क्या चलेगा, तो बोले सर उस पर्टिकुलर समय में उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। और सस्पेंशन कौन करेगा, तो बोले सर यूपीएससी के चेयरमैन और आपके जेएसपीएससी के चेयरमैन जो हैं, चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, सर इनका सस्पेंशन जो है वह किसके माध्यम से होगा, तो बोले सर प्रेसिडेंट के माध्यम से होगा। बट एट द सेम टाइम सर, बट एट द सेम टाइम हमें क्या याद रखना है, बोले सर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, इनका सस्पेंशन किसके माध्यम से होगा, तो वह गवर्नर के माध्यम से होगा। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट, यू गाइस कैन लेट मी नो। तो हम इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव मैनर में देखने का प्रयास करते हैं, कैसे नजर आ रहा है। लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक ओवर दिस। रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर, रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, सर प्रेसिडेंट। Coming to this, removal of chairman and member of JSPSC, sir president. Removal of chairman and member of State Public Service Commission, sir president. Removing authority. And when it comes to the suspension authority, what we need to understand, जब हम suspension की बात कर रहे हैं तो सर suspension के केस में बोले सर यहाँ president, यहाँ प्रेसिडेंट था, सर यहाँ पर भी प्रेसिडेंट था, और यहाँ पर कौन नजर आ रहा है, तो सर यहाँ पर गवर्नर नजर आ रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर कनेक्टिंग हियर। हमने रेजिग्नेशन भी देखा था, और रेजिग्नेशन में भी हमने क्या देखा था, तो बोले सर हमने रेजिग्नेशन में भी ऐसा ही कुछ देखा था, प्रेसिडेंट, सर प्रेसिडेंट और गवर्नर। एम आई वेरी क्लियर विद ऑल दीज कंडीशंस, यू गाइस कैन लेट मी नो वेदर 316 और वेदर इट इज हैविंग एसोसिएशन विद द 317, यू गाइस कैन लेट मी नो। हमने टेन्योर को डिस्कस किया। टेन्योर के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे कहा, व्हेन इट कम्स टू द टेन्योर ऑफ द सो कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी और द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज फॉर 6:65 ईयर। And when it comes to the tenure of the member of JSPSC, is 6:62 year. And when it comes to the tenure of the member of the or the chairman of the State Public Service Commission, 6 or the 62 year, understood to every single student. I'm done with every single aspect. Whether it is having association with the appointment, whether it is having association with the tenure, whether it is having association with the removal, whether it is having association with the suspension, or whether it is having association with the so-called the resignation. I hope this is quite clear to every single student so that I can head forward to the next one. And the next article is Article 380. हमने आर्टिकल नंबर 315 में डिस्कस तो किया कि यूपीएससी का एग्जिस्टेंस है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जिस्टेंस है, जेएसपीएससी का एग्जिस्टेंस है, लेकिन हमने इनके कंपोजिशन की बात नहीं की। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द यूपीएससी, द कंपोजिशन ऑफ द जेएसपीएससी विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर, प्लीज टू लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। And when it comes to the composition of the State Public Service Commission, this will be determined by the so-called the governor. तो यह किसके माध्यम से डिटरमाइन किया जाएगा, बोले गवर्नर के माध्यम से डिटरमाइन किया जाएगा, ये आपको समझना है। Very clear to every single student so that I can have discussion over the clauses or the provision which are mentioned under this particular article. Okay, so let's have discussion over this right now. That's very good. Heading forward to this only. In case of the Union Commission or Joint State Public Service Commission, the President, and in case of the State Commission, the Governor of the state, may by regulation determine the number of members of the Commission and their service conditions, may make provisions with respect to the number of members of the staff and their service conditions, provided that condition of service of member of public service commission shall not be varied to their advantage disadvantage after their appointment. Very clear to all the persons those who are here, please do let me know so that I can head forward to the next ताकि हम अगले आर्टिकल की ओर चर्चा कर सकें। 319 में क्या है, बोले सर प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिसेज बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर। एक ऑफिस से जब आप रिटायर होने जा रहे हैं तो उस ऑफिस में आपका दोबारा क्या नहीं हो सकता, सर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। 319, एम आई वेरी क्लियर विद द 319 एज वेल टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर कनेक्टिंग हियर। दैट्स वेरी गुड, that's really very good. Coming to the next article, that is 320. अब हम 320 पर चर्चा करने वाले। और जब 320 की बात करी जा रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच आई वुड ask you to remember,
that the functions of the public service commissions are started under article number 320। तो आपके चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जेएसपीएससी हो, सर इनके फंक्शंस जो हैं वो किस आर्टिकल का हिस्सा हैं? तो इनके फंक्शंस आर्टिकल नंबर 320 का हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी सदस्य जो हैं, आप सभी छात्र छात्राएं, आप सभी मित्र जो यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, आप सभी के दिमाग में बेहद स्पष्ट होना चाहिए that the functions of the Union Public Service Commission, that the functions of the State Public Service Commission, at the same, the functions of the Joint State Public Service Commission, these are enshrined under Article number 320. These are mentioned under Article number 320. Am I very clear to every single student, those who are here, so that I can head forward to the next one? Okay. We will be having discussion over the functions of UPSC. There is nothing to worry. When we will be having discussion over this body, we will definitely be having discussion over the functions and the powers. Functions of UPSC, we will be having discussion lately. There is no need to worry. There is no need to be to take any tension. There is no need to take any stress up. When we will be having discussion over this particular body, how this particular body appears to us by the day, we will definitely be looking into the functions of the Union Public Service Commission. And by that period, I will be asking you a question that do let me know under which article of Indian Constitution the functions of UPSC are started, and you will be letting me know under article number 320 the functions of UPSC are started. Am I very clear to every single student? So that I can have discussion over the 321 ताकि हम फिर से एक बार 321 पर चर्चा कर सकें. And when it comes to the एक्सटेंशन ऑफ द पावर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, बोले सर जो पावर्स दी गई हैं आर्टिकल नंबर 320 में, सर वह अगर एक्सटेंड करने की बात करी जाए तो सर हम जानते हैं अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर an act made by parliament as the case may be or by the legislature of a state may provide for exercise of additional functions by UPSC or state public service commission as respect to the services of the union or the state, understood to every single student, you guys can let me know. जब आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, इसके फंक्शंस को एक्सटेंड करना है, किस आर्टिकल में किया जा सकता है? आपका आंसर होना चाहिए 321 में किया जा सकता है। सर कौन एम्पावर्ड है? बोले सर पार्लियामेंट एम्पावर्ड है। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस को एक्सटेंड करना है, किस आर्टिकल में होगा? 321 में। कौन एम्पावर्ड है? बोले पार्लियामेंट एम्पावर्ड है। एट द सेम टाइम सर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस को क्या करना है? बोले एक्सटेंड करना है। कौन एम्पावर्ड है? तो स्टेट लेजिस्लेचर एम्पावर्ड है। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट? प्लीज डू लेट मी नो. That's very good. Coming to the next article, that is article number 322. Sir, expenses of the public service commission such as salaries, such as allowances, such as emoluments of the chairman and members and staff. Sir, these salaries, allowances, emoluments will be paid out from Consolidated Fund of India and Consolidated Fund of State. बोले सर कहाँ से पे करे जाएंगे? तो बोले सर यूपीएससी के केस में यह आपके सीएफआई से पे किया जाएगा, और सर जीएसपीएससी के केस में यह आपके सीएफएस से पे किया जाएगा, उस प्रपोर्शन में जो प्रपोर्शन आपके राष्ट्रपति ने डिटरमाइन किया है। और एट द सेम टाइम सर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में कहां से पे किया जाएगा? बोले सर सीएफएस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पेमेंट किया जाएगा। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट? दोज हु आर कनेक्टिंग हियर, प्लीज टू लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। क्या मैं आपको बेहद स्पष्ट हूं? दैट्स वेरी गुड. Right now, let's talk about the reports of the Public Service Commission. And when it comes to the Consolidated Fund of India, I hope you guys are having very clear-cut idea that the Consolidated Fund of India is mentioned under what article? Sir, Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India is having its mention under आर्टिकल नंबर 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मेंशन 266 में नजर आता है। एंड व्हेन इट कम्स टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इज आल्सो हैविंग इट्स मेंशन, fund of state is also having its mention under article number 266. Am I very clear to every single student? Those who are correcting here, please to let me know. क्या मैं आपको बेहद स्पष्ट हूं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए. At the same time, under article 266 there is mention of one more fund, that is public account of India. Public account of India and public account of state and public account of state. Sir, these are the two funds
These are the two funds which are mentioned under Article 266. Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? Please to let me know. क्या मैं आपको बेहद स्पष्ट हूँ? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। ये वो फंड्स हैं, क्योंकि अगर आप सरकार के फंड्स की बात करते हैं, when we do talk about the funds of government, funds of government, the funds of government can be categorized into the three types of, or they can be categorized into the three. The very first, consolidated fund of India, the consolidated fund of India. The second, contingency fund of India, contingency fund of India. And the third one, that means public account of India. That means public account of India. And the provision for consolidated fund of India and the provision for public account of India, they are started under Article 266, Clause 1, Clause 2. And when it comes to the contingency fund of India, this is mentioned under Article 267 under Clause 1. Am I very clear to every single student? Those who are connecting here, please do let me know. So the expenses of UPSC, expenses of UPSC will be beared upon consolidated fund of India, and expenses of JSPSC will be beared upon consolidated fund of state, and expenses of state public service commission will be beared upon consolidated fund of state, sir, mentioned under Article 322. Am I very clear to every single student? Those who are connecting here, please to let me know. क्या मैं आपको बेहद स्पष्ट हूँ? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम अगले आर्टिकल की ओर बढ़ सकें. We can have discussion over 323 as well. अब हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है? बोले सर रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं आर्टिकल 323 में. कैसी रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं? बोले सर 323 में जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, दिस विल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? बोले प्रेसिडेंट को रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा. And when it comes to the State Public Service Commission, State Public Service Commission will be submitting its report to the so-called the governor. And when it comes to the JSPSC will also submit its report to the governor. Am I very clear to every single student? Those who are connecting here, please to let me know. क्या मैं आपको बेहद स्पष्ट हूँ? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए. JSPSC भी अपनी रिपोर्ट कैसे सबमिट करेगा? तो JSPSC भी जो है वो अपनी रिपोर्ट गवर्नर को ही सबमिट करेगा. सर ये प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट will table down this report, will table down this report in a parliament with the explanatory memorandum, which advice which is tendered by council of minister is accepted, and which advice which is tendered by council of UPSC is not accepted. At the same time, sir, the governor will be tabling down the same report to the state legislature. Governor क्या करेगा? बोले सर इसे state legislature में रखेगा. This is the point which we need to understand. JSPSC की रिपोर्ट को गवर्नर कहाँ रखेगा? बोले सर रिस्पेक्टिव स्टेट्स में रखेगा. कहाँ रखेगा? बोले रिस्पेक्टिव स्टेट्स में रखेगा. So am I very clear with the constitutional provisions from 308 to the 323, which I'm constantly asking you guys to classify? You want to look after the back slide? You can have a look after this particular slide. Neha, am I very clear to you? You want this particular slide? You can definitely have a look over this particular slide. Neha, once done, please do let me know so that I can head forward to the next one. एक बार आपका हो जाए तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा ताकि हम अगले स्लाइड की ओर चर्चा कर सकें, अगले पॉइंट की ओर चर्चा कर सकें. I'm waiting for the response from the Neha. Okay, so right now I'm heading forward to the next. Please try to have a look over this. I'm constantly asking in the previous session also, and by this particular session also, I had asked you that from 308 to the 314 provisions are for services, services under union and state are mentioned. And when it comes to the 315 to the 323, sir, provisions for public service commission are started. Public service commission are started.
We are done with this as well. We are done with this in the previous session, in the previous session, and we are done with this by today's session. Those who are connecting for the very first time, not having any idea about myself, they can visit out the profile of mine over an academy. It's Kuldeep Dubey. Do visit the profile. These are mine subjects on which you guys can connect. And this is my raffle code KD496. When you will be using this particular raffle code, you will be allotted almost by the day you will be allotted. In the remaining period of time, you will be allotted 20% discount. Along with this, if you are going to purchase the 12-month subscription, you will be allotted the 3-month subscription in free. That means एक महीने की, एक साल की फीस में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन, और 24 महीने के फीस में, 2 साल की फीस में 30 महीने का सब्सक्रिप्शन, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ आप ले सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप क्या कर सकें, आज ही सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। कल के सेशन में, मतलब अगले सेशन में हमारी जो चर्चा होगी, अगले सेशन में वी विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर दिस। प्लीज बी वेरी क्लियर दैट बी कंसिस्टेंट इनटू द सेशंस, be consistent. I'm constantly asking every single individual, those who are preparing for the 69th BPSC, to be consistent into the sessions. When you will be very consistent, when you will be reflecting the honesty, as well as the when you will be maintaining the hard work, nobody can stop you to clear your examination. Just give me some time, allow me some time, start connecting with me on the sessions which I'm delivering on the platform. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो, और आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो भाई हमने 69th बीपीएससी के लिए बैच को स्टार्ट किया था 29th ऑफ मार्च से। हम फिर एक बैच लेकर आ रहे हैं। आपका कब बोले सर, आपके हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है बैच। तो आप इस बैच पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 70th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको सिर्फ मेरे सब्सक्रिप्शन, मेरे राफल कोड का इस्तेमाल करना होगा, अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन को परचेज करना होगा, और निश्चित तौर पर जाकर फिर आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी तैयारी को लुक आफ्टर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और राफल कोड मत भूलिए, अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस से जरूर बताइए KD496 मेरा राफल कोड है। 6 तारीख से हमने इस बैच को स्टार्ट किया है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास अभी पीडीएफ आपके बिहार स्टेट ग्रुप में आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। गुड नाइट टू एवरीवन। ओके।